ก็ขอโอกาสท่านเจ้าคุณโพธิญาณวิเทศเนี่ยขออำนวยพรอำนวยธรรมแก่ศรัทธาสาธุชนทุกท่าน วันนี้ก็ขอแสดงความปิดบังกับพวกเราด้วยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่นะหลวงพ่อเลี่ยมท่านมาไม่ได้นะทั้งที่มีความตั้งใจนะท่านก็ได้พูดคุยกับอาตมาอยู่หลายครั้งหลายคราว่าอยากมาสงเคราะห์ท่านชวนมาปีแล้วนะแต่ก็เหมือนที่โยมว่าแหละนะทุกอย่างมันก็เป็นอนิจจังนะมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ยังมีลูกศิษย์ลูกหา ซึ่งก็เป็นเครือข่ายสายศิษย์ของหลวงปู่ชานะอย่างท่านเจ้าคุณพระโพธิญาณวิเทศหรือหลวงพ่อประสันโนนะท่านก็มาเป็นประมุขประธานให้นะก็ทำให้อาตมาสบายใจขึ้นเยอะเหมือนกัน Luang Por Jundee would like to ask permission to speak on Dhamma and extend his blessings to all of us gathered here. Luang Por Jundee would like to kindly ask permission from Luang Por Passano to speak on Dhamma, and then like to extend his blessings to all of us, all the good people gathered here, and also mention his regrets that our senior monk Luang Por Liem, Than Chau Kun Rat Pavanavikrom, couldn't come. He intended to, and mentioned to Luang Por Jundee many times that he'd like to give your group support, and he gave importance to following up on the invitation that you made many times to him already. And but eventually, like one of the lay people said this morning, it all falls under the principle of anicca. I'm not sure whether somebody can come or not. But never mind, we do have the fortune to have some other students of Luang Por Chah gathered here. For example, Luang Por Passano, which makes Luang Por Jundee feel happy that there's a monk taking the role of the senior monk for all of us today. In Hindi, Luang Por says, "You're welcome to translate it." Yeah. Okay, he would like to, if it's direct. หลวงพ่อจุนดีने मुझे लुंग पोर प्रसन्नो से अनुमति ली धम्मा देशना के लिए, और हम सबको आशीर्वाद दिया कि हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। और इस बात का भी खेद जताया कि लुंग पोर लियम हमारे जो सीनियर टीचर हैं वो नहीं आ पाए, हालांकि उनकी बहुत इच्छा थी और कई बार उन्होंने कहा भी था लुंग पोर जुंदी को कि वो इंडिया के ग्रुप को सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन अनित्य भाव के अनित्यता के नियम के अनुसार ऐसा ही नहीं हो पाया। बट लेकिन जो और सीनियर
डिसाइपल्स हैं लुंग पोर चा के, जैसे लुंग पोर पसन्नो और लुंग पोर जुंदी, वो यहाँ उनके बिहाफ पे आए हैं। มาตอนนี้ก็เท่ากับมาส่งเสริมให้กำลังใจนะแก่ผู้ปฏิบัติคือพวกเราทั้งหลายนะแต่ว่าการมาของครูบาอาจารย์นะโดยเฉพาะอาตมารวมมาด้วยนะอาตมาก็คงไม่มีความรู้ความสามารถพิเศษอะไรนะนอกเหนือจากประสบการณ์ที่อยู่กับครูบาอาจารย์มานะก็จะมาพูดถึงประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะนี่เพื่อประดับความรู้ของผู้ปฏิบัติซึ่งจะว่าไปแล้วมันก็เป็นส่วนสำคัญ การปฏิบัตินั้นเรื่องประสบการณ์เป็นสำคัญเป็นสิ่งที่สำคัญนะการศึกษาให้เกิดความรู้ก็เป็นส่วนหนึ่งละนะแต่ว่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการฝึกการปฏิบัติซึ่งมันเจาะจงไปสู่ความจริงนะเจาะจงไปสู่ความจริงของชีวิตนะแล้วมันมีส่วนสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวันด้วยนะ Luang Por Jundee is happy to be able to join in giving support and encouragement to all of us who are gathered here to practice together. And hearing senior monks talk is always very special opportunity. But Luang Por needs to mention that he feels he doesn't have the very special knowledge that is needed to teach in this way.
ปฏิบัติไปเจอแต่ความทุกข์นั่นก็หมายถึงว่าท่านต้องการให้เรามีประสบการณ์นะหรือได้เรียนรู้ในคำที่ว่าทุกข์หรือทุกขะนะก่อนที่เราจะข้ามทุกข์นี้ไปได้หรือจุดมุ่งหมายของเราคือความดับทุกข์ซึ่งเราต้องมาเรียนรู้ประสบการณ์ในเรื่องความทุกข์ในเบื้องแรกSo we practice mainly to gain an experience of dukkha and practice that we do together for everybody. If we haven't practiced and really experienced what dukkha suffering means, then we might know, but we don't really see about the truth. So our aim is to have a clear understanding of dukkha and then extinguish suffering, overcoming it. And so we practice for the inquiring into dukkha, and this is something that Luang Por Chah led all of us to see very clearly here. Initially, when Luang Por Jundee came, he felt he didn't have much happiness. It was just a direct experience of dukkha, and Luang Por Chah many times said that that's good so because the experience of dukkha needs to be first in order to understand how to overcome it. हाँ, आप बता रहे हैं कि जो हमारी साधना होती है उसका मुख्य उद्देश्य ही रहता है कि हम दुख का अनुभव कर सकें, क्योंकि अगर हम साधना ठीक से नहीं करते प्रैक्टिस, तो हमें दुख के बारे में किताबी ज्ञान होगा लेकिन उसका अनुभव नहीं होगा। और सम्यक दृष्टि के लिए, ठीक से समझने के लिए दुख का अनुभव होना ज़रूरी है, क्योंकि भगवान की शिक्षा है कि हमको दुख का इंक्वायरी करनी होती है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दुख, आपको दुख का समझ होनी चाहिए, भगवान ने ये समझाया है। और तो इसलिए दुख का अनुभव होगा तो तभी उसकी समझ भी होगी। और लुंग पोर जुंदी कहते हैं कि जब मैं शुरू में आया था अजान चा के पास, तो वहाँ सिर्फ दुख ही दुख का था, कोई सुख तो महसूस नहीं होता था। लेकिन वो बात समझाते थे अजान चा कि जब तक दुख का अनुभव नहीं होगा, उसको समझेंगे नहीं, तब तक दुख का सेसेशन नहीं होगा, उनका दुख का निरोध नहीं हो पाएगा। การเรียนรู้โดยการปฏิบัติจึงไม่ได้อาศัยการศึกษามาก สำนวนของหลวงปู่ชาท่านใช้คำง่ายๆเนี่ยคือไม่ต้องอาศัยการศึกษามากคนมีลมหายใจเนี่ยคนมีความรู้สึก เจ็บคือถ้ามีความรู้สึกลักษณะนี้ท่านว่าปฏิบัติได้หมดเขาด่าโกรธเป็นไหมท่านจะถามอย่างนี้เขาสรรเสริญก็หัวเราะเป็นไหมเนี่ยถ้ารู้แค่สองอย่างนี้แหละเนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ได้เนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าการเรียนรู้ธรรมะต้องถึกศึกษามากเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเจาะไปถึงความจริงของมันโดยการปฏิบัติจริงๆนะมันไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้น ถ้าตีเจ็บรู้สึกตัวอยู่มันก็ปฏิบัติได้นะแต่นั้นท่านจึง สามารถที่จะเอาธรรมะนี่เข้าไปสู่คนได้ทุกระดับชั้นนะชั้นใดก็ตามเพราะว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นได้ทุกคนนะจะเป็นคนชาวไร่ชาวนาชาวสวนพ่อค้าพ่อขายจนถึงพระมหากษัตริย์เนี่ยสภาวะของความทุกข์มันก็เป็นอย่างเดียวกันเนี่ยความรู้สึกทางด้านจิตใจก็ไม่แตกต่างกันนี่ความรู้สึกร้อนรู้สึกเย็นรู้สึกดีใจเสียใจนี่ไม่มีความแตกต่างนะเมื่อไม่มีความแตกต่างอย่างนี้นี่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปสู่จิตใจของผู้นั้นได้นะหมายถึงว่า
ทุกคนสามารถปฏิบัติได้แบบง่ายๆWhen talking about the practice, Luang Por Chah always emphasized that it's not necessary to know a lot, to have a lot of knowledge. He said, if you have the breath and you feel pain, then that's already enough for understanding the foundations of the practice. If somebody scolds you and you can still laugh and smile, that is already enough for the practice, and it's good practice if one can do that. If they hit you and it hurts, then Luang Por Chah said, you can take this as your practice. And practicing with this feeling and experience of suffering is what relates to everybody on all levels of society, whether somebody is a farmer or a worker, a merchant, or somebody from the higher educated classes of societies, all the way up to king. Then as long as this person experiences and feels the suffering in his heart and uses the experience of hot and cold and direct experience as his basis for practice, then there's no difference. The Dhamma is able to equally enter the hearts of everybody. Then everybody can practice. आप आगे कह रहे थे कि जो भी जब हम साधना की बात करते हैं, प्रैक्टिस की बात करते हैं, तो इसमें बहुत नॉलेज की, पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं है. लुंग पोर चाह कहा करते थे कि यदि आपका जन्म हुआ है और कष्ट हो रहा है तो वही आपको साधना के लिए काफ़ी है. उदाहरण के रूप में कोई आपको डांटता है और आपको कष्ट बुरा लगता है, लेकिन फिर भी आप स्माइल करते हो, हंसते हो, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है. कोई आपको शारीरिक कष्ट पहुंचाता है और आपको अनुभव भी होता है दुख का, और फिर भी उसको आप सहन कर पाते हैं, तो ये आपकी प्रैक्टिस है. तो इस तरह से अगर हम देखें तो चाहे कोई भी हो, किसान हो, वर्कर हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, या केवल अप टू राजा तक भी कोई हो, हर आदमी का कुछ ना कुछ अप्रिय अनुभव, दुख के अनुभव होते रहते हैं. गर्मी सर्दी, दुख सुख होता, अनुभव होता रहता है, और यही अनुभव हमारी साधना के आलंबन बनते हैं. इसी के आधार पर हम चित्त को मुक्त कर सकते हैं. การเรียนรู้เรื่องของความทุกข์มันจึงไม่ใช่ตัวหนังสือแต่มันเป็นเรื่องของจิตใจนะทุกคนมีจิตใจรับรู้แล้วก็มีอายตนะทุกท่านทุกคนซึ่งมันเป็นสื่อการเรียนการศึกษานะถ้ามีตามันก็เป็นสื่อมีหูมันก็เป็นสื่อเข้ามาสู่จิตใจนะถ้าคนมีตามีหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะทั้งหมดนะแล้วเป็นคนปกติไม่เป็นบ้าจิตใจรับรู้สัมผัสได้ดีนี่เท่านี้แหละอุปกรณ์ในการเรียนรู้ในการศึกษาแล้วก็พร้อมปฏิบัติอยู่ในตัวนะฉะนั้นเมื่อทุกอย่างพร้อมลักษณะนี้เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ได้เกี่ยงในเรื่องของการศึกษาตัวหนังสือนะท่านให้มาเรียนรู้ความจริงดังที่พูดเบื้องต้นว่าให้มาเรียนรู้เรื่องของความทุกข์เพราะว่าทุกคนนั้นไม่ชอบความทุกข์แต่สิ่งที่เราชอบปรารถนากันคือความสุขเนี่ยแต่เราไม่อยากแตะความทุกข์ไม่อยากพบความทุกข์อยากจะเอาสุขอย่างเดียวเนี่ยถ้าอย่างนั้นมันถูกไหมเนี่ยถ้าภาษาพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านก็ให้มาเรียนรู้ความทุกข์เพราะมันเป็นสัจธรรมเรียกว่าทุกขอริยสัจนะทุกขอริยสัจนี้มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติในการดำเนินชีวิตของเรานี่แหละเนี่ยดังนั้นมันจึงไม่ยุ่งยากนะถ้าเรารู้เรื่องของความทุกข์เราก็สามารถที่จะศึกษาความดับทุกข์ได้ I
So when we take on to study suffering or dukkha, we don't actually need to open the textbooks. It's not about studying the textbook, it's about studying heart. And everybody has the heart and the capacity to study dukkha in this way. And we also have the sense basis, the ayatana, which is the sense doors, the communication channels, which we can use for studying and understanding how things arise. For example, the eye, the ear, whatever it picks up. If we have a clear mind and we're not deranged mentally, then we can use this for understanding how dukkha arises. You see the sense faculties as an object of your studies. The teachers of the forest tradition therefore said it's really enough to study the experience directly rather than the books. And we have so much in common with that. Everybody dislikes suffering and everybody hopes for happiness. So we all hope not to meet suffering. So will there be suffering then? The Buddha therefore pointed out that the suffering or dukkha is one of the noble truths, is something that is naturally there as a genuine teaching for everybody, and it arises and ceases according to nature, so we can use this for studying its arising and its ceasing. जो हम दुख को समझने की बात करते हैं तो इसका मतलब नहीं कि दुख के बारे में वो कोई किताब पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, लेकिन हम अपने हार्ट चित्त को पढ़ना चाहते हैं और वो सब को हम सब लोग कर सकते हैं। एक जैसे माध्यम है 6 आयतनों का, हमारे 6 जो इंद्रियां हैं वो हमेशा अनुभव करती रहती हैं और कुछ ना कुछ दुख का अनुभव होता रहता है। तो अगर हमारा चित्त स्पष्ट क्लियर है, मन क्लियर है, हम सजग हैं, तो हमको मालूम पड़ता रहता है कि किस तरह से दुख की उत्पत्ति होती है। जो फॉरेस्ट ट्रेडिशन के टीचर्स हैं जो वो हमेशा यही कहते हैं कि हमको दुख का अनुभव जो हो रहा है उसको स्टडी करना है, मतलब उसको इन्वेस्टिगेट करना है, समझना है ठीक से, और ये हर आदमी कर सकता है। हम सबकी ये इच्छा होती है कि हम दुख से निदान पाएँ, दुख से मुक्ति हो, और इसी कारण से भगवान ने दुख को भी एक नोबल ट्रुथ कहा, आर्य सत्य कहा, क्योंकि ये उत्पन्न होता है और किसी कंडीशंस के कारण, कुछ परिस्थिति के कारण उत्पन्न होता है और फिर समाप्त हो जाता है, उसका निरोध हो जाता है। तो उसको समझना ही दुख को समझना है। ดังนั้นการแสวงหาความสุขของปุถุชนคนทั่วไปกับการแสวงหาของผู้รู้จึงมีความแตกต่างกันมากการแสวงหาความสุขของเราต้องสนองด้วยความอยากแต่การแสวงหาของท่านผู้รู้กลับให้ลดละความอยากมันจึงสวนกระแสมันจึงทุกข์ไงฉะนั้นเวลาท่านพาปฏิบัติมันก็เลยไม่ได้ตามปรารถนามันก็เลยเจอแต่ทุกข์แต่ความทุกข์นั้นน่ะมันพัฒนาคนความสุขนั้นมันทำคนให้แย่ลงหรือมันทำลายคนท่านจะใช้สำนวนนี้ฉะนั้นเวลาปฏิบัติท่านจึงให้เห็นทุกข์ซะก่อนไม่ให้ความสะดวกไม่ให้ความสบายต้องผ่านด่านนี้ไปก่อนให้มันรู้เองให้มันเห็นเองว่าสุขมันอยู่ที่ไหนมันฟากทุกข์หรือว่ามันต้องหนีไปจากทุกข์มันถึงจะพบความสุขเมื่อเราปฏิบัติเราจะเห็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราเองแรกๆไม่ต้องไปถามถึงหรอกความสุขมันไม่เจอมันเจอแต่ความทุกข์พอมาถามว่าหลวงพ่อทำไมมีแต่ทุกข์เนี่ยทุกข์นั้นมันถูกแล้วล่ะถ้าปฏิบัติแล้วสุขมันไม่ถูกขึ้นว่ายิ่งทำให้เรางงไปอีกเนี่ยถ้าบอกถ้าทุกข์แล้วถูกแล้วเนี่ยเรายิ่งงงเพราะเราปฏิบัติเพื่ออยากให้มันพบความสุขใช่ไหมไม่เป็นไรก็ทุกข์ต่อไป
ถ้ามีศรัทธาอยู่ก็ปฏิบัติต่อไปเนี่ยให้มันมีประสบการณ์กับความทุกข์ต่อไปมันจะเกิดความรู้โอ้จริงๆแล้วทุกขอริยสัจนี้พระพุทธเจ้าต้องการให้กำหนดรู้ให้เรียนรู้เนี่ยพอไปถึงตรงนั้นมันจะเกิดความเข้าใจว่าโอ้กว่าที่เราจะพบความสุขมันต้องรู้จักเรื่องของความทุกข์เสียก่อนมันจึงจะข้ามความทุกข์นี้ไปเจอความสุขได้อันนี้ก็มันเกิดขึ้นกับประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติ So our aims and our searching in the practice is different from somebody who is a normal average puthujjana, normal average person that follows his or her desires and hopes for happiness, whereas somebody who has seen the Dhamma and knows the Dhamma sees things differently. He practices in order to reduce desires, and going against the stream for the uninstructed ordinary person is difficult, and it's not in line with what one hopes from the practice, and it's difficult to do. So we need to rely on this faith that this will bring us to the realization and to the happiness that lies beyond dukkha. Luang Por Chah said that dukkha develops a person, whereas sukha actually brings a person's decline. So first we have to pass dukkha and pain and difficult experiences and see for ourselves, look at where to find happiness and ease while we are facing dukkha. And we say to our teachers, all I get is suffering from the practice. Teachers may say, that's good, that's a good thing for you. And if we still have the faith to look further, then we may find a point where we pass dukkha and we see that sukha in the way of a practitioner is different than sukha in the way of somebody who doesn't practice, because sukha arises through going through dukkha for a practitioner. हमारे जो उद्देश्य हैं और जो हम खोज कर रहे हैं हमारी साधना से, वो सामान्य गृहस्थ से काफ़ी भिन्न है। जो सामान्य गृहस्थ हैं, पुथुजन हैं, वो अपनी तृष्णाओं को, अपनी इच्छाओं को पूर्ति में ही सुख समझते हैं। लेकिन जो धर्म को समझता है, जो इस बात को जानता है, वो समझता है कि सुख, सच्चा सुख हमारी इच्छाओं को, तृष्णाओं को कम करने में, ना कि उनकी पूर्ति में। तो इस तरह से हमारा जो समझ है, हमारा मार्ग भिन्न हो जाता है। और ऐसा करने के लिए एक श्रद्धा का होना बहुत आवश्यक है। अगर श्रद्धा नहीं होगी तो इस मार्ग पर चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसी के कारण से मार्ग पर चल के इस सत्य का साक्षात्कार हो पाता है। लुंग पोर चाह कहा करते थे कि अगर दुख का अनुभव ही सचमुच में अगर हम उसको ठीक से समझें तो आदमी को एक आगे बढ़ाता है धर्म के मार्ग पे। कई बार सुख के अनुभव से आदमी अपने उसके पराभव की तरफ जाता है, क्योंकि हम जब दुख का होता है तभी हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इससे ठीक से धर्मानुकूल निजात पाएँ। और हम जब भी किसी टीचर के पास जाते हैं, अपने कहते हैं कि मुझे साधना में बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, तो टीचर कई बार कहते हैं यार बहुत अच्छी बात है, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। तो ये बात को समझ पाना बहुत कई बार मुश्किल हो जाता है कि सचमुच में सुख जो है वो दुख के अनुभव के माध्यम से ही सुख की अनुभूति होती है, और जब हम दुख के थ्रू पास होते हैं तभी सुख आता है। वो एक अलग तरह का सुख है जो कि इंद्रियों के तृष्णाओं के पूर्ति से मिलता है। ये उससे भिन्न तरह का सुख है। ดังนั้นผู้ปฏิบัติต้องเป็นผู้กล้า กล้าที่จะเผชิญกับความทุกข์ นี่
ครูบาอาจารย์ท่านฝึกให้กล้าพอถึงอย่างไรเราก็ต้องเจอมันอยู่ตลอดเวลานะแม้ในชีวิตประจำวันนี้เราก็ต้องเจอมันอยู่ตลอดเวลานะแต่อนาคตข้างหน้าทั้งใกล้และไกลนี้ยังมีอุปสรรคสำคัญก็คือความทุกข์นี่แหละเนี่ยที่เราจะต้องเผชิญเนี่ยฉะนั้นการฝึกการหัดให้รู้เรื่องของความทุกข์จึงเป็นส่วนสำคัญของผู้ปฏิบัติที่จะพึงเรียนรู้ให้เกิดประสบการณ์ขึ้นมานะเพราะว่าเราต้องการที่จะหนีทุกข์แต่ว่าทุกข์นี่เราเอากายหนีจากมันไม่ได้นะหนีไปไหนมันก็ตามเราไปเพราะทุกข์นั้นมันประจำอยู่กับสังขารของเรานะสังขารทั้งร่างกายและจิตใจซึ่งมันเป็นกองทุกข์ดังที่เราสวดเนี่ยมันเป็นกองทุกข์ขันธ์ห้าเป็นกองทุกข์เนี่ยฉะนั้นเราจะเอากายหนีจากมันไม่ได้เนี่ยเราต้องมาเรียนรู้มาศึกษา มาศึกษาเรื่องของความทุกข์ถ้าเราเรียนรู้เรื่องนี้เราจะเข้าใจความสุขด้วยเนี่ยสิ่งที่เราต้องการแท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่ความสุขหรอก เพราะว่าความสุขกับความทุกข์นั้นมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการมันไม่ใช่ความดับทุกข์เนี่ยโดยเฉพาะความสุขที่โลกต้องการใช่ไหมเนี่ยโลกต้องการความสุขก็แสวงหาแต่ความสุขแต่ว่าเรากลับกลายเป็นเหยื่อหรือเป็นทาสของตัณหานะซึ่งมันหาไม่เจอหาไม่พบนะดังนั้นความสุขของผู้ปฏิบัติต้องการจริงๆขอใช้คำใหม่ว่ามันไม่ใช่ความสุขเพราะถ้าความสุขนี่จะให้ความหมายเป็นโลกธรรมไปนะเพราะสุขกับทุกข์มันเป็นโลกธรรมนะแต่คำที่พระพุทธเจ้าท่านเอามาใช้อันนี้มันดีมันซึ้งมันกินใจนะเราต้องการความสงบ ความสงบนี้มันสงบจากสุขจากทุกข์นี่เราต้องการตรงนั้นนะถ้าเราต้องการความสุขอยู่เราก็ตีความหมายความสุขผิดนะเราก็วิ่งหาความสุขแต่มันก็ไม่เจอเพราะสุขกับทุกข์มันไปด้วยกันนะแต่ถ้าวกมาหาความสงบปุ๊บเนี่ยมันสงบจากสุขจากทุกข์ฉะนั้นเราจึงเรียนรู้ทั้งความทุกข์แล้วก็เรียนรู้ความสุขด้วยเนี่ยศึกษาในเรื่องของความทุกข์แล้วก็ศึกษาเรื่องของความสุขที่เราว่า happiness เนี่ยว่ามันมีความหมายอะไรเนี่ยถ้าในโลกธรรมมันก็ไม่ออกไปจากทุกข์เนี่ยมันเป็นสุขเป็นทุกข์ที่เป็นหน้ามือหลังมือแล้วก็หงายขึ้นแล้วก็คว่ำลงอยู่อย่างนั้นนะแต่ถ้าเป็นความสงบนี้มันอยู่เหนือตรงนั้นนะแต่เราจำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องความทุกข์และความสุขเนี่ยมันจึงจะเกิดความสงบขึ้นมาได้ When we practice, we need to dare to face dukkha, and we need a certain courage to go towards dukkha. This is what our teachers of the forest tradition always emphasize, because in either way, we need to face suffering, even in daily life, in our direct experience. In the near future, we'll have to face suffering, we'll have to face dukkha, and we need to be able to meet this in a courageous and insightful way, and not fall prone to the illusion that we can run away from a physical sense or like the bodily dukkha. At least for the body, we know we can easily see how the body is already always a source of dukkha.
So there's no sense of looking for a physical escape from dukkha. We need to use our minds to overcome dukkha. And what we need to do is to really understand about what we are expecting from pleasure and pain in a worldly sense. We look at pleasure and pain and happiness and suffering and understand that in our worldly understanding it's always a change between those two. We are always the slave of these two qualities, happiness and suffering. We're a slave of our desires to either have happiness or avoid suffering. And this the Buddha called the Loka Dhamma, the worldly Dhammas. And in fact, actually, the Buddha described what the aim of our practice is in a different level. He used a different word that Luang Por Jundee says finds inspiring, because it is beyond sukha and dukkha, which is the word peace. What we're actually trying to develop in our practice and what we're looking for is not sukha in the worldly way, not happiness in the worldly way, but we're looking for peace, and we're looking for peace from both happiness and suffering. And this is some real understanding of not only dukkha but also of the word happiness. What it actually, why is it that there's always change between happiness and suffering? Because of our craving and because of us not being at peace with happiness and suffering. So peace is actually the higher aim of our practice, and it's beyond sukha and dukkha. But in order to get to peace, we need to study sukha and dukkha. हमारी जो साधना है, जो प्रैक्टिस है, उसको मुख्य आयाम है कि दुख का सामना करें, दुख को अनुभव करें। और इसके लिए हमें काफ़ी करेज की, काफ़ी हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। और जो फॉरेस्ट ट्रेडिशन के टीचर हैं वो यही हमें सिखाते हैं कि जीवन में भी हमको सुख और दुख तो अनुभव होंगे ही, और हम इस भुलावे में न रहें कि हम किसी तरह से दुख से छूट जाएंगे। शरीर में कोई दुख है तो चलो कुछ इसका इलाज कर लेंगे तो हमेशा ठुक जाएंगे। हमें ये समझना चाहिए कि शरीर का धर्म ही है कि वो हमेशा कष्ट देता है, उसमें दुख किसी न किसी तरह का दुख होता ही रहता है। तो शारीरिक रूप से हम दुख से मुक्ति नहीं पा सकते, लेकिन मन के रूप से, मानसिक रूप से हम दुख से मुक्ति पा सकते हैं। तो हमें मन को समझना होगा, मन के दुख और सुख को समझना होगा। सामान्य जीवन में हम दुख को बदल के सुख की ओर जाना चाहते हैं, तो इस कारण से हम सुख और दुख के एक तरह से गुलाम बन जाते हैं, और इसी तरह की हमारी इच्छाएं, तृष्णाएं रहती हैं, किसी तरह से हम दुख से मुक्ति हो जाए। भगवान बुद्ध ने समझाया कि ये सब लोक धम्म हैं 8 तरह के, जो हमको सुख और दुख और सुखद वेदना, दुखद वेदना के चक्कर में फंसाए रखते हैं। भगवान ने हमको एक उद्देश्य जो दिया साधना का, वो दुख और सुख से ऊपर उठ के पीस का, शांति का दिया, जो कि दुख और सुख दोनों से ही विचलित ना हो। तो जो दोनों सुख और दुख से ऊपर उठाए हमको, यही सचमुच में हमारी साधना का उद्देश्य होना चाहिए। किसी भी तरह से हम दुख को सुख में बदल दें, ये संभव नहीं है और ये साधना का उद्देश्य नहीं है। और इसी का अगर जब तक हम दुख और सुख दोनों से समता में रहेंगे, दोनों के प्रति शांत नहीं रहेंगे, तब तक हम कभी भी साधना में हमारी प्रगति नहीं होगी। तो जो हमारा ऊंचा उद्देश्य, एक हायर एम है, वो यही है कि सुख और दुख से ऊपर उठ के शांति रहे, ताकि चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हमारा मन विचलित ना हो। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम दुख और सुख दोनों को ठीक से समझें, अनुभव के आधार पर समझें। มีประโยคหนึ่งซึ่งเป็นประโยคที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสเอาไว้เนี่ยสุขเกิดจากความสงบรู้เห็นตามเป็นจริงอย่างไรเนี่ยการละอัศมิมานะเสียได้เป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นภาษาไทยแต่จะ
ฟังยากๆหน่อยนะแต่ก็หมายความว่าเหมือนที่พูดมาเมื่อกี้นี้ว่าสุขที่พระพุทธเจ้าท่านแนะนำให้เราปฏิบัติเพื่อความกลับกลายเป็นความสงบจริงๆแต่ผันมาเป็นความสุขได้จึงเรียกว่าสุขเกิดจากความสงบแล้วก็บ่งบอกถึงพระปัญญาหรือบ่งบอกถึงตัวปัญญานะรู้เห็นตามเป็นจริงอย่างไรเนี่ยตัวนี้จะสำทับเข้ามานะถ้าสำนวนหลวงปู่ชาท่านบอกว่านะสงบจิตกับสงบปัญญาสงบด้วยปัญญานะอันหนึ่งสงบจิตด้วยการข่มอันหนึ่งสงบด้วยปัญญาคือความรู้นี่ก็เป็นประโยคสุดท้ายที่พระองค์ทรงตรัสว่ารู้เห็นตามเป็นจริงอย่างไรเนี่ยตรงนั้นแหละตรงที่ผู้ปฏิบัติต้องการเนี่ยแต่จะมีสักกี่คนที่จะรู้ว่าจุดนี้มันอยู่ที่ไหนเนี่ยแล้วก็เข้าใจว่าที่เรามุ่งหมายคือที่ไหนเนี่ยนี่ก็พูดสั้นๆนี่ว่าต้องการความรู้เห็นตามความเป็นจริงนี่ก็คือการรู้สัจธรรมนั่นเองสำทับเข้ามาอีกว่าการละอัศมิมานะเสียได้เป็นความสุขอย่างยิ่งก็คือการชนะหรือชำแรกกิเลสทั้งหลายทั้งปวงที่มันเป็น อนุสัยภายในจิตใจเนี่ยละมันได้เนี่ยมันถึงจะเป็นความสุขอย่างยิ่งนั้นท่านพูดถึงที่สุดของความทุกข์ก็คือตัวปัญญา Luang Por Jundee quoted one of the translations of the Buddha's words. Roughly is sukha that arises from peace. How shall we realize this? It is eventually by abandoning asamimana and that we arrive at wisdom and abandon suffering. So that the happiness that the Buddha meant in the guidelines he gave us is the happiness that arises like in a peaceful way, coming from wisdom. It speaks for wisdom. It's a happiness, or it's a happiness based in peace that is the fruit of wisdom. And there's an expression that Luang Por Jundee used as "Ru hen tam kwam ben ching," means to know and see in line with truth. And this is what really brings peace of mind, and that because the peace that we may attain through controlling the mind is in one way not yet the ultimate peace. The peace that arises from wisdom is what actually eventually brings us to the end of the practice and to complete overcoming of suffering. So how do we see things in accordance with truth is the question what we need to ask ourselves in the practice. And there's only few people that can do it to that level, to see in line with truth, in accordance with truth, to develop wisdom or panya to that level, which means we can really abandon asamimana, conceit, and the kilesas, the desires, and the tendencies, the anusaya that are dormant in our mind. This is real happiness, and this real happiness, like in the ultimate sense, comes by means of panya.
जंदी ने एक भगवान बुद्ध वाणी का एक ट्रांसलेशन कोट किया था कि जो सुख है वो शांति, सच्चा सुख शांति से आता है। कैसे इसको हम रियलाइज़ कर सकते हैं, कैसे इसको हम अनुभव कर सकते हैं, तो बताते हैं कि वो अस्मिमान का के निर्वेद से ही, कि उनकी उसकी सेसेशन से ही, उसके निरोध से ही सच्चा सुख मिलता है। तो सच्चा सुख जो है, जो शांति है, वो पन्या से जाती है, विजडम से आती है, और वो एक पन्या का फल है। मन को कंट्रोल करके जो सुख मिलता है वो शाश्वत नहीं है, लेकिन अगर पन्या से हम चित्त शुद्ध हो जाए और हम चीज़ों को जैसी हैं वैसे देख पाएँ, यथाभूत ध्यान दर्शन जैसा है वैसा देख पाएँ, तो सचमुच में हमें शांति का अनुभव होता है। जो सारे दुख हैं उनसे कंप्लीट सेसेशन होता है, सब सारे दुखों का समाप्ति होती है। तो इसको कैसे देखें, तो बताते हैं कि बहुत थोड़े लोग ही ऐसा इतनी गहराई से साधना कर पाते हैं कि हम अस्मिमान को समाप्त कर सकें। वो तभी संभव है जब हमें आदत पड़ जाए कि हम जो भी देखें उसको स्थिति के अनुसार से ही देखें, और वैसा करने से ही हमारे अनुसय क्लेश जो हैं वो समाप्त होते हैं और सच्चा सुख का अनुभव होता है, जो कि एक प्रज्ञा का एक फल है। รู้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยเป็นส่วนสำคัญของผู้ปฏิบัติ ทำความรู้ให้เกิดขึ้นให้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่สิ่งลึกลับซับซ้อนอะไรมากมายนักความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่รอบตัวของผู้ปฏิบัติแม้ในตัวเราหรือนอกตัวเราใกล้ๆตัวเราไกลตัวเราเนี่ยมันก็เป็นสัจจะเป็นความจริงเนี่ยให้เราเรียนรู้เนี่ยฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสอนให้เราเรียนรู้ถึงหลักความจริงที่มันมีอยู่กับตัวเราเองเนี่ยเห็นความจริงของชีวิตอย่างเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยความไม่เที่ยงของชีวิตหรือความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยทั้งในกายและนอกกายแม้ภายในจิตใจเนี่ยซึ่งมันเป็นสิ่งเรียนรู้ที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเรียนรู้จะพึงหาให้พบเพราะถ้าไม่เช่นนั้นมันก็จะไม่สงบหาเท่าไหร่มันก็ไม่สงบถ้ามันไม่รู้ความจริงนะเนี่ยจะวิ่งไปที่ไหนมันก็ไม่สงบแต่ถ้ามันเห็นความจริงเนี่ยมันจะสงบอยู่ที่ไหนมันก็จะสงบเนี่ยฉะนั้นที่อาตมาใช้คำว่าความสุขที่แท้จริงกลับกลายเป็นความสงบมันมีความหมายลึกซึ้งกว่ากันเนี่ยอย่างหลวงปู่ชาท่านแสวงหาตอนแรกท่านบอกว่าผมก็เหมือนกันเนี่ยผมก็ดิ้นรนแสวงหาความสงบแต่คิดว่าความสงบมันจะอยู่ข้างนอกก็เลยต้องวิ่งไปที่ไหนเขาว่าสงบก็ไปเนี่ยทางเหนือทางใต้ตะวันออกตะวันตกเนี่ยในถ้ำในเขาเนี่ยในป่าลึกก็ไปเนี่ยแต่มันก็ไม่สงบเนี่ยเห็นไหมถ้าหาออกนอกตัวแล้วมันจะไม่พบเลยเนี่ยจนกว่าจิตใจเนี่ยมันเกิดสัมมาทิฏฐิเมื่อใจมันเกิดสัมมาทิฏฐิปุ๊บมันเห็นเลยเนี่ยนั่งอยู่ก็เห็นนอนอยู่ก็เห็นเนี่ยรอบตัวมันมองเห็นหมดเนี่ยพอจิตใจเป็นสัมมาทิฏฐิปุ๊บนี่โอ้ท่านร้องอ๋อขึ้นมาเนี่ยถ้าความสงบที่แท้จริงไม่ใช่อยู่ข้างนอกเลยเนี่ยแต่มันอยู่ที่สัมมาทิฏฐิก็คือตัวปัญญาที่เราพูดกันเมื่อกี้นี้ว่ารู้เห็นตามเป็นจริงอย่างไรนั่นก็คือตัวปัญญาเมื่อตัวปัญญาเห็นความจริงนั่นแหละคือความสงบมันเกิดขึ้นทันที อ
So knowing and seeing and with truth, or yathatang jnanadassana, I guess is the Pali word. It's like it's something that has really to do with a direct experience or direct knowing in line with what is one's own reality, directly as to be experienced by us, close to ourselves, close to our own day experience. It's nothing mystical, nothing particularly esoteric, but it's it comes from realizing whatever is like directly relating to our body, our mind. Say, for example, the experience in our own bodies. For example, this leads to a real direct knowledge and an immediate peace, to seeing as it is in reality what our life, our body is about, and it becomes real and immediately accessible knowledge through the direct experience. So that Luang Por Chah said, like in his practice, in the beginning he was also like all over the place and looking for peace and longing for peace, going everywhere, all over the country, north, south, east, west, and to the mountains, to the oceans, and into the caves, to find a way of practicing peace or finding peace, until he realized like he can't find it in this external search. He can't really find peace unless it's peace that arises from right view, samadhi, or like what Luang Por just quoted there, knowing and seeing in line with truth or in line with reality. So then actually wherever Luang Por Chah was, felt like there's peace right there. Sitting, just simply sitting there, he could see this is peace, or lying, whatever posture, everything was a direct source of real peace, because real peace is not outside, it lies within samadhi, or like Luang Por Jundee just mentioned in the section before, panya, like wisdom, and then it is apparent then straight away, right here and then, that this is genuine peace. जो यथाभूत ज्ञान दर्शन की बात है, वो कोई मिस्टिकल चीज़ नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत अलौकिक है. ये हम सबके डायरेक्ट अनुभव है, जिसको हम ठीक से देखें, और अगर हम शरीर और मन के अंदर होने वाली गतिविधियों को ठीक से देखें, तो हमें अपने आप ये जो जैसा हो रहा है उसको देखने का अनुभव होने लगता है, और अपने शरीर को सबसे बहुत आराम से देखा जा सकता है डायरेक्टली, और जैसा है वैसा ही उसको देखें, जो जैसा है. तो उसी से ये एक ऐसी ज्ञान है जो इमीडिएटली हमारे को अवेलेबल है. हम किसी भी क्षण इस ओर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि लुंग पर चाह ने भी शुरू के इस दिनों में बहुत कोशिश की थी. वो बताते हैं कि मैं शांति की खोज में कभी चारों तरफ घूमता रहा, कभी पहाड़ों में, कभी समुद्र में, कभी गुफाओं में, कभी कंदराओं में, लेकिन बाहर कहीं भी पीस का अनुभव नहीं हुआ. और बाद में समझ में आया कि वो समाधि दृष्टि से ही सचमुच में शांति का अनुभव होता है. जो जैसा है उसको वैसा देखें, सत्य के आधार पर देखें, तो सचमुच में चित्त शांत हो जाता है. फिर हर पोस्चर में, चाहे बैठे हों, चाहे लेटे हों, चाहे हम अनुभव कर सकते हैं, डायरेक्ट अनुभव कि शांति है, कोई मन बेचैन नहीं हो रहा है. और वो जैसे लुंग पर जुंदी ने पहले ही बताया था, सम्यक का एक फल है, सम्यक दृष्टि का फल है, जिससे कि हमको सचमुच में शांति का अनुभव होता है. ผู้ปฏิบัติถ้าเข้าใจลักษณะนี้คิดว่าน่าจะพบความสงบ ถ้าเข้าใจตรงนี้การเป็นอยู่การดำเนินชีวิตของเรา ก็จะไม่เป็นปัญหาจะไม่ทุกข์มาก การได้มาการเสียไปในการดำเนินชีวิตก็เข้าใจเพราะมีธรรมะคือสงบได้มาก็สงบเสียไปก็สงบ มีคำหนึ่งขอแถมให้
เป็นคำของหลวงพ่อพุทธทาส ท่านก็ให้ข้อคิดดีท่านบอกว่ายามจะได้ให้เป็นไม่เป็นทุกข์ยามจะเป็นให้ถูกตามวิถีเนี่ยยามจะตายให้เป็นเห็นสุดดีเนี่ยถ้าอย่างนี้ไม่มีทุกเมื่อเอ่ยนี่ถ้าเราเข้าใจธรรมะเข้าใจถึงความสงบเนี่ยมันจะสงบ ถ้าได้มาด้วยปัญญานั่นแหละทั้งว่าได้คนได้มาเป็นก็คือได้มารู้ว่ามันต้องเสียไปเนี่ยคือปัญญาจะรู้เท่าทันทันทีเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของเราเนี่ยก็รู้เท่าทันว่าไม่ใช่ของเราเนี่ยมันได้มาก็เสียไปก็ได้มาเนี่ยนั่นคือดังได้ว่าคนได้ให้เป็นเนี่ยยามจะเป็นให้ถูกเนี่ยเป็นอะไรก็เป็นแต่เขาสมมติให้เป็นอะไรก็เป็นเนี่ยแต่มันไม่หลงไปตามเขาให้เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นนายอำเภอเนี่ยเป็นผู้ว่าเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นอะไรก็ตามเถอะเป็นโดยสมมุติเป็นให้ถูกตามวิถีเนี่ยแต่ว่ามันเห็นด้วยปัญญาสิ่งนั้นมันเป็นเพียงสมมุติเท่านั้นเนี่ยเป็นก็เป็นได้แต่มันไม่เป็นจริงเนี่ยแต่สัจธรรมคือความจริงมันอยู่ในใจอยู่แล้วมันเห็นอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับสิ่งเหล่านั้นเพราะเข้าใจธรรมะนี่มันสงบเนี่ยสงบไม่ขึ้นลงเนี่ยยามจะตายให้เป็นเห็นสุดดีเนี่ยนี่ท่านหมายถึงว่าตายก่อนตายฝึกให้เข้าใจตายก่อนตายเนี่ยทุกคนเกิดมาเนี่ยจุดสุดท้ายก็คือที่เดียวกันเนี่ยคือตายเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกไว้ก่อนเนี่ยเราจะทุกข์แต่ถ้าเราฝึกไว้เนี่ยเขาเรียกว่ามันตายก่อนตายเนี่ยถ้าสำนวนหลวงปู่ชาถึงว่าที่เราอาจจะคุ้นเคยหรือบางคนอาจจะไม่ได้ยินเหมือนใช้แก้วที่ไม่แตกเหมือนแก้วแตกแล้วถ้าสำนวนหลวงปู่ชาถึงว่าอย่างนี้นั่นคือตายให้เป็นตายก่อนตายก่อนที่มันจะแตกมันแตกไปแล้วคนนี้ก็เลยไม่ทุกข์เนี่ยถ้าคนหนึ่งใช้แก้วแตกกับคนหนึ่งใช้แก้วไม่แตกมันจะมีความต่างกันคนที่ใช้แก้วแตกแต่ยังไม่แตกนี่เวลามันแตกมันสบายใจกว่าเนี่ยสบายเลยเพราะมันแตกไปแล้วแตกก่อนแตกแล้วเนี่ยแต่คนที่ไม่เคยคิดเลยว่าแก้วนี้มันต้องไม่แตกเนี่ยพอแตกแล้วก็ทุกข์ทันทีนี่ความหมายมันก็อันเดียวกันเนี่ยกับที่ท่านบอกว่าตายให้เป็นเห็นสุดดีเนี่ยนี่ถ้าเป็นภาษาพุทธเจ้าก็เรียกมรณานุสติมันพิจารณาบ่อยๆมันจะเห็นความตายก่อนตายเนี่ยถ้าอย่างนี้ก็มีสุขตั้งแต่เกิดจนตายเข้าใจเนี่ยเข้าใจความเกิดความตายมันก็จบตรงนี้เนี่ยนั่นเรียกว่าผู้ปฏิบัตินั้นถ้าเข้าใจถึงจุดนี้แล้วก็จะสบายเนี่ยการปฏิบัติก็ถึงความสงบ So if we are practicing and understanding this, how important right view and peace is in our practice, then what we'll develop in our practice is genuinely peaceful, and whatever we do in
lives, they won't create problems. All the achievements or gains and that they're not followed by loss and deterioration, they wouldn't become a problem, because our heart is immersed in the Dhamma, or in the truth, and in a peace from being subject to gain and loss, and being somebody or not being the opposite of this. There is saying that Luang Por Jundee quotes by Luang Por Jundee a little, by Luang Por Buddhadasa, Ajahn Buddhadasa, one of the great thinkers and practitioners of Thai Buddhism, and it's a little poem, and Luang Por Jundee comments on it. It's saying when it comes to getting things, we need to get them in the way that we see gain and loss correctly. When it comes to being somebody, we need to do it in the right way, and being somebody correctly. And when we die, we need to die in a way that's good. So this is a very rough translation. It's a very poetic poem. So Luang Por then explained every line. The first part is about gaining and losing. So whenever there's something that we achieve or get, or any gain in our lives, if we have this mind of wisdom, then we know straight away that there will be loss. Whenever we get something, we let go of it. Whenever we make some profit, we see that this will also be loss again, and so we don't have any investment of attachment to that whenever these gain and loss accrue to us. And then in the second line, Buddhadasa talked about when we are becoming somebody, for example, becoming a teacher, getting a position of being the village headman or leader of a community, for example, then to simply see it right according to the method and the context that is implied by the conventions. We are just simply doing a duty, and this is conventions, but we don't get identified with it, and we don't develop a sense of wanting to be this. And then eventually, the last line in this little Buddhadasa poem is ultimately to die in the correct way. So this is funny because like die hai ben in Thai is like ben means to be, and you die in a way that it really becomes it's a pun on you die and be alive with dying, so to say. So and die hai ben, and so he says this means actually that we practice to see death before it arises, and not be threatened by death, and be afraid of death, but we practice marananusati. We practice to contemplate death, and we use the expression in Ajahn Chah's teachings. He uses the expression of to die before you die, and this is an idiom that he uses a lot, and means that we try to let go of things before we are forced to let go. And he said another comparison that Luang Por Chah gave is when you have a glass and you use a precious glass that is breakable, you consider it as already broken while you're using it. So for example, if some person carries a glass, a precious expensive glass, and he doesn't break it, and another person carries the same glass and breaks it, for somebody watching these two people, there wouldn't be any difference in what they think about and how they feel about the glass being either broken or not broken. It's not the point, and he already saw that this glass is breakable, so the glass is already broken. Is one of the idioms that Luang Por Chah mentioned in terms of seeing your life, just like you die before you die. And this makes us feel we're able to see death directly, and
And if we're able to take this, the practice, our practice to the level of wisdom in this way, then we'll be able to be at peace with gain and loss, or like being somebody or not being somebody, or having eventually to let go of everything and die. लुंगपुर कह रहे थे कि जो ठीक से समझ है, राइट व्यू है, सम्मा दृष्टि है, उसका बहुत महत्व है सच्ची शांति के लिए। क्योंकि जो कुछ भी चाहे हम कुछ भी करें, जीवन में परेशानियां तो आने ही वाली हैं। कभी लाभ होगा, हानि होगी, सुख होगा, दुख होगा। ये सब हमारे लिए प्रॉब्लम ना बने अगर हम सचमुच में हमारा दृष्टिकोण ठीक हो। अगर हमारा चित्त में धर्म है तो हानि लाभ हमको किसी तरह से परेशान नहीं कर सकते। तो लुंग पोर जुंदी ने एक दृष्टांत, एक कविता है अजान बुद्धदासा की, जो थाईलैंड के बहुत प्रसिद्ध आचार्य रहे हैं, भिक्षु रहे हैं, और उनकी थाई पोएम का उन्होंने ट्रांसलेशन करके बताया। तो उसमें 3 मुख्य आयाम थे कि अगर हम कोई चीज़ प्राप्त करते हैं तो उसको प्राप्त करना हो तो भी ठीक तरह से करें। अगर हमें कुछ बनना है, इफ यू वांट टू बी समबडी, तो भी वो ठीक से करें। और अगर हम मर रहे हैं तो मरने का काम भी ठीक से करें। उस एक साधारण भाषा में उसको, उस कविता को समझाने के प्रयास किया। तो पहली बात जो थी उसमें कि जो कुछ भी हम उपलब्ध करते हैं, जो भी उपलब्धि होती है, कुछ भी लाभ होता है, तो उसके प्रति हमारा अटैचमेंट ना हो। हम उस लाभ हानि को छोड़ के उससे लेट गो ऑफ दैट, ताकि उसके, क्योंकि ये सब लोक धर्म है जो बदलते रहते हैं। अगर उससे हम अटैच होंगे तो हमारी शांति भंग हो जाएगी। दूसरी बात थी, उन्होंने कहा टू बी बीइंग समबडी, तो कि हम कभी कोई आचार्य बन जाते हैं, कभी किसी गांव के हेडमैन बन गए, कहीं किसी कमेटी के अध्यक्ष बन गए, तो वो समझें कि ये कन्वेंशन है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है, सत्य नहीं है, ये एक सामान्य जीवन व्यवहार की बातें हैं। उसको अपनी आइडेंटिटी ना बना लें, उसको ये ना कहें कि मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, क्योंकि ये जहाँ बनने की बात आएगी वहाँ दुख हो जाएगा। और तीसरी बात जो उन्होंने कही कि टू डाई इन ए करेक्ट वे, किस तरह से ठीक से मरे। तो एक थाई वर्ड का के ऊपर एक पन था उसमें कि उस चीज़ का मतलब ऐसे सामान्य करें कि मरते हुए जीना वाली बात थी। तो उसका तात्पर्य लुंग पोर जुंदी समझाते हैं, उसका मतलब है कि हम मृत्यु को ठीक से समझें, मरणानुस्मृति इस तरह से हो कि मृत्यु आने से पहले ही हम उसको ठीक से समझ जाएं। लुंग पोर चाह उसको कहा करते थे कि मरने से पहले मरना, जीते जी मरने वाली बात जैसे भारत में कही जाती है, तो अजान चाह भी उसको कहा करते थे, डाई बिफोर यू डाई। तो उसको उदाहरण के तौर पे एक और समझाते थे कि एक ग्लास है, अगर वो ग्लास का एक स्वभाव है कि वो गिरेगा तो टूट जाएगा। तो और फिर अगर हमको ये बात समझ में नहीं आई, इसको हमने ठीक से नहीं देखा, तो अगर वो टूट जाता है तो बहुत दुख होता है। लेकिन अगर हम भी समझें कि ये शीशा है, इसका स्वभाव ही टूटना है, तो फिर वो टूटे या ना टूटे, हमको ना टूटने पे सुख होगा, ना उसके टूटने पे दुख होगा, क्योंकि हम समझते हैं कि टूटने वाला पदार्थ है। तो इस तरह से समझदारी से साधना करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं हम अपनी जीवन के अनुभवों के आधार पे। तो हानि लाभ, सुख दुख, और कुछ बनना, कुछ नहीं बनना, मरना, और उसको भी समझदारी से मरना, इस तरह से हमारी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है और हम सच्ची शांति का अनुभव कर पाते हैं। ก็คงจะสมควรนะเนาะชั่วโมงเสร็จๆเนี่ยก็ขอสรุปให้เป็นข้อคิดสั้นๆก็ขอให้สายแก้วที่ยังไม่แตกเหมือนมันแตกแล้วนะแล้วก็อนุโมทนากับทุกท่านทุกคนนะขอให้เจริญในธรรมโดยทั่วกัน Luang Por Jundee would like to, thinks it's probably enough now as a little Dhamma talk. As a short summary, he'd like to say, let's all of us see our glass as already broken, and he wishes us all the best and rejoices in the goodness of our practice. अंत में लुंग पोर जुंदी कह रहे हैं कि जब समय
काफ़ी हो गया है। तो एक समरी के रूप में वो कहते हैं कि आए हम अपने एक जो ग्लास है, एक उदाहरण के तौर पे समझें कि वो पहले टूटा हुआ है, तो फिर हमको शांति का अनुभव होगा। Do the acknowledgement of the teaching at the time? Yes. Okay. So we'll express our gratitude to Luang Por. Anmayam Dhamma Kathaya Sadhu Karam Dadamase. Sadhu 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 Anumodami